Western Uttar Pradesh, tracking the campaign trail of RLD chief Jayant Chaudhary. Baghpat is situated in western Uttar Pradesh and is 40 kilometers from Delhi. The Baghpat Lok Sabha constituency is amongst the 80 parliamentary seats in Uttar Pradesh. It encompasses 5 assembly segments. The constituency has a population of 2 million. 21.11% of the population lives in urban areas. 78.89% of the population is rural. Scheduled castes make up 11.44% of the population. Baghpat is a Hindu majority district with about 70% Hindu population and 28% Muslim population. In 2019, 1.62 million qualified to vote, of which 64.68% turned up to polling stations. Baghpat lies on the eastern banks of the Yamuna River and is within the National Capital Region. It has an agriculture-based economy with sugarcane as the main crop, followed by wheat, mustard and vegetables. There are 3 sugar mills in the district. Baghpat was founded by the Pandav brothers of the Mahabharata. It was originally known as Vigraprastha, the tiger city, because of the population of tigers found many centuries ago. The sitting MP here is BJP's Satyapal Singh, who won the election by a margin of 23,502 votes. He got 50.32% of the votes. The runner-up was Jayant Chaudhary, the chief of the RLD, who got 5,02,287 votes. This time around, the contest is between Samajwadi Party's Amarpal Sharma and the RLD's Rajkumar Sangwan. The RLD is fighting this election in alliance with the BJP this time around. Chaudhary Jayant Singh was born in 1978 in Texas, United States. He was born in a Hindu Jat family to Chaudhary Ajit Singh, the founder and chief of the Rashtriya Lok Dal. He is the grandson of Chaudhary Charan Singh, the former Prime Minister of India, who was recently awarded a Bharat Ratna by the government. He graduated from Sri Venkateshwara College in Delhi University. In 2002, he received a master's degree in accounting and finance from the London School of Economics and Political Science. He started his political career in 2009 when he won as a member of parliament from Mathura, Uttar Pradesh. He was one of the prime movers on the land acquisition issue, and he introduced a private member bill on land acquisition in the Lok Sabha. In 2022, he was elected a member of the Rajya Sabha. He is married to designer Charu Singh, with whom he has 2 children. The Baghpat Lok Sabha constituency was somewhat of a family seat of the Chaudharys up until 2014. Chaudhary Charan Singh had won the seat 4 consecutive times from 1977 to 1984. The baton was handed over to his son Ajit Singh, who won the seat 7 times. Tables turned when he lost the seat against the BJP in 2014. The RLD had refused to ally with any other political party during the 2014 Lok Sabha polls. In 2019, his son Jayant contested from the same seat in alliance with the Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party, but still ended up losing against the BJP. The streets are clogged. Farmers have gathered in large numbers. They have brought their tractors along. They're here for their leader, Chaudhary Jayant Singh, who will be arriving any moment now. In the heart of farmland politics, the Jat belt of Uttar Pradesh, the 3 generations of families have come out to show support to the RLD-BJP alliance. And the locals are only too eager to make a song and dance about it. The tractors are adorned with the RLD and BJP flags, and the cops have a tough job of controlling the crowd. As you can see, it's quite interesting. As part of his road show, there is a convoy, not of bikes or SUVs, but actually of tractors. Wherever you see on this road, there are tractors back to back. Farmers, of course, are an important vote bank in this belt. There is farming of sugarcane and other crops, of course, here, and which is why it's quite interesting that his roadshow is going to consist of just tractors, as you can see. Let's talk to some of these people. ये काफी अनोखी बात है जयंत चौधरी जी के आज के कार्यक्रम का कि यहाँ बाइकें नहीं दिख रही, गाड़ियाँ नहीं दिख रही, सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिख रहे हैं। क्षेत्र ही जो है ट्रैक्टरों का है, असली किसानों का क्षेत्र है, ट्रैक्टर ही रखते हैं यहाँ
और जैसे आप कह रहे हैं जयंत चौधरी जी का सबसे बड़ा समर्थन किसानों से आता है। ट्रैक्टर ही तो ले रहे हम अपने, हाँ हमारा गाड़ी ट्रैक्टर किसानों की निशानी है। तो किसानों की निशानी है हमारा चौधरी का ट्रैक्टर ही। किसान जो हैं वो खुश हैं भाजपा और लोकदल के गठबंधन से। बेजा जीवन में कभी इतना किसान कभी खुश होया नहीं होगा जितना आज खुश है। मेल हो पाया है लोकदल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मेल हो। हाँ साहब पूरा मेल है पूरा। जहाँ चौधरी साहब ने कह दिया हम तो तन मन धन से साथ खड़े। चौधरी साहब की सेना है जो कर चौधरी साहब कहेंगे नूर तैयार रहेगी। यादव चौधरी साहब की सेना भाई। So they are saying wherever of course Jayant Chaudhary tells them to vote, they are going to vote. Obviously Jayant Chaudhary has been concentrating a lot on the politics of the farmer. His grandfather Chaudhry Charan Singh has just been awarded the Bharat Ratna of course for his service to the country, but also in uplifting farmers' issues and of course the welfare of farmers. As you can see over here, everywhere you look there are tractors, as I said, on this road, and you can see the BJP flag along with the RLD flag of course here. There are small children of course, and also youngsters and also old farmers who have taken time out to join this mega road show of Jayant Chaudhary. We'll speak to some more people here and try and understand. हम देख रहे हैं, मैं वही कह रहा था कि बड़े अनोखा है कि हम देखते हैं कई रोड शो में बाइकें आती हैं, कई रोड शो में जो है फॉर्च्यूनर आती हैं, यहाँ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर सिर्फ दिख रहे हैं। इसका क्या महत्व है? महत्व तो ये है कि यहाँ किसानों की तो है, किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं बस, और किसान का ही बेटा आ रहा। आप सब अपने खेत छोड़ के आए हैं, रोजगार छोड़ के आए हैं, तो कुछ खास होगा या चौधरी साहब की देन है, सब चौधरी साहब की वजह था। कितनी खुशी हुई आपको कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला? अभी बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हो रही भल्ला जी। ढेर को डब्बी खुशी है, ढेर को डब्बी। और क्या आप खुश हैं कि ये जो भाजपा और लोकदल का गठबंधन बना, इससे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? खुश है। जब पहले हो जाता तो और बढ़िया था, और बढ़िया था। किसान की गन्ना किसान खुश हैं। किसान बस पेमिटी लेट हो रहा, पेमिटी वारी हो रहा, नहीं तो ठीक है। नहीं गणेश भाई तो खुश है, पेमिटी टाइम पे नहीं हो रहा, तो आप चाहेंगे क्योंकि अब जयंत चौधरी अब आगे हैं इस गठबंधन, तो वो मुद्दा उठाएं। हाँ मुद्दा उठाएंगे, पेमिट सही होगा, टीम का हमारा पेमिट भी सारे काम फटाफट होंगे। Quite interesting, they are saying that there are some issues that still remain. The sugarcane farmers want payments to be on time, they don't want it to be delayed, but they are confident that now with Jayant Chaudhary joining the BJP, he will put pressure on the BJP government in the centre and the state to actually get them the payments on time. Shakti Rath, the convoy atop with Jayant Chaudhary will canvass Baghpat, and a lot of western Uttar Pradesh is all decked up. Chaudhry Charan Singh, the agricultural reformer, is at the front and centre of the RLD and BJP's campaign. His picture is flanking PM Modi and Jayant's on the bus. Jayant Chaudhary and the RLD's influence is largely in western Uttar Pradesh. This is the Jat heartland, where Jats constitute a majority of population in a lot of the seats over here, be it Baghpat, be it Kairana, and their influence extends all the way to Mathura and Aligarh on the other side, of course, of western Uttar Pradesh. Ajit Singh, of course, Jayant Chaudhary's father, has been a part of the NDA alliance in the past, but he's also been part of various opposition governments. Similarly, Jayant Chaudhary was earlier with the Samajwadi Party, and now he's joined hands with the BJP. The Jat vote, though, has swayed from time to time away from the Singh family, but once again, it seems, has come back to Jayant Chaudhary with the awarding of Bharat Ratna to his grandfather, Chaudhry Charan Singh. A reason Jayant claims he joined the BJP alliance. We've seen over here people on ground say they have issues with the current government, but because Jayant has allied with them, they're confident he will raise their issues with the powers that be in Delhi and in Lucknow. Loud cheers and slogans greet Jayant as he arrives on the spot. He's somewhat of a local hero here.
He gets on the Shakti Rath and greets the people. चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में लिया गया फैसला किसान के भविष्य के नजर में जो होनी है कानून है उसको नजर में रखते हुए लिया मेरा फैसला हल्का मत करना. The cheers get louder and the slogans more high-pitched as Jayant showcases his grandfather, Chaudhry Charan Singh's photo to the crowd. It was, after all, the Bharat Ratna accorded to the architect of land reforms in UP that brought the BJP and RLD closer ahead of the polls. The rally moves on to the next road stop. And we get a chance to speak to Jayant. Namaskar, मैं उदय प्रताप सिंह. You're watching us on NewsX and India News. We are on ground in Western Uttar Pradesh. हमारी लगातार लोकसभा 2024 चुनाव पर कवरेज जारी है. हमारे संग जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी इन वेस्टर्न यूपी ऑन बोर्ड हिज शक्ति रथ. बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. पूरा मज़ा आ रहा है. पहले तो पूछूंगा शक्ति रथ इस पे सवार हैं आप, तो ये नाम कैसे पड़ा? अब एक तो हमारे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिले और हम किसानों की शक्ति, नौजवानों की शक्ति, ग्रामीण भारत की बुलंद आवाज़ों को लेके साथ चलना चाहते हैं, तो इसलिए नाम हमने सोचा. और थोड़ा शक्ति पे चर्चा भी हो रही थी देश भर में. बिल्कुल, शक्ति पे चर्चा ज़रूर हो रही है. मैं पूछना चाहूँगा कि देश भर में क्योंकि इस बार आप उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं हैं, आपका लगातार मैं देख रहा हूँ दौरे राजस्थान में भी हो रहे हैं, अन्य इलाकों में भी अब होंगे आने वाले दिनों में, तो माहौल क्या है, क्या देख रहे हैं आप जैन जी ऑन ग्राउंड? लोग बिल्कुल एक मत हैं. किसी को कहीं ये शक नहीं है कि सरकार एनडीए की दोबारा आ रही है. क्वेश्चन ये है कि कुछ लोकल फैक्टर होते हैं, तो हर क्षेत्र का मिजाज अलग है, थोड़ा फ्लेवर अलग है. अभी हम वेस्टर्न यूपी में हैं, तो यहाँ किसानों की राजनीति हमेशा मजबूत रही, लोकदल का भी मजबूत क्षेत्र रहा. तो अब जब हम दोनों साथ आ गए, बीजेपी और लोकदल, जो दो प्रमुख पार्टियाँ यहाँ पे हैं, तो चुनाव में कुछ बचा ही नहीं. उस तरह का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है. मेल हो पा रहा है ऑन ग्राउंड, वो बहुत ज़रूरी होता है. गठबंधन तो हो जाता है, मगर ऑन ग्राउंड क्या मेल हो रहा है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बसपा को फ़ायदा हुआ था, सपा को नहीं. हमने देखा है अन्य गठबंधनों में एक पार्टी को फ़ायदा हो जाता है, दूसरे को नहीं. तो मेल हो रहा है ऑन ग्राउंड. हमारा वोट बाय एंड लार्ज हमेशा तब्दील हुआ है. सारे हमारे अलायंसेज में लोग मानते हैं. 5 साल मैं उनकी मानता हूँ, चुनाव के टाइम वो मेरी मान लेते हैं. इससे पहले चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहे. तो और एज सच कोई आपस में तनावपूर्ण स्थितियां नहीं रही हैं. इतने साल विपक्ष में भी रहे, लेकिन सामाजिक हिसाब से ये लोगों की इच्छा के अनुरूप हमने फैसला लिया. हमारे वर्कर चाहते थे और अब उनको लग रहा है कि आगे और हमारे काम होंगे. पार्टी के दायरे को भी हम बढ़ा सकते हैं और अपने मुद्दों को भी आगे कर सकते हैं. खास तौर से जब चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया, मुझसे एक भी कार्यकर्ता ने ये नहीं पूछा कि आपने गठबंधन क्यों कर लिया. वरना जब आप इस तरह से फैसले लेते हो, गठबंधन बदलते हो, तो कुछ लोगों के अंदर संकोच होता है. कोई डाउट नहीं है. अगर वो ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं, अब ये तो चीज़ें होती हैं. सही समय पे सही फैसला. एंड टू बी फेयर टू जैन जी, ऑन ग्राउंड हम वेस्टर्न यूपी में घूम रहे हैं. लॉट ऑफ बीजेपी लीडर्स ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा टेलिंग अस कि इनके आने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर हुआ है इस बार. व्हाट आर द मेन इशूज सर? बिकॉज यू ऑलवेज बीन अ पर्सन हु रेजेस इशूज ऑन ग्राउंड. यू नो what is going through people's minds, not just national issues but local issues, be it in Vidhan Sabha or Lok Sabha in the past. I've covered your campaign. What do you believe this time are the main issues? I think people, particularly in Western UP, want to see some big ticket investments happening in this region to develop industry, to develop alternate sort of employment opportunities for younger people. That is a major concern. For a lot of the younger people in this area traditionally have been looking at the forces as a very credible job. So they want to maintain the sanctity of that going forward. And farmers' issues are critical in this region. So there is a hope that now that RLD is with BJP, BJP has also been trying to do, good for farmers. But जो भी थोड़ी गुंजाइश थी, अब हम लोग मिलके दूर करेंगे. That's what the sugarcane farmer also is saying, that there are still issues with payments, but they're hopeful now you will get that sorted. See, as far as the payment situation, now you're finding that 90-95% of the private mills are also paying well in time, within the 14-day period which is mandated by law. So in that sense, there is a big reform that has happened. Of course,
people expect to have a more remunerative price. So going forward, we do expect to see larger increases in the price. आखिरी सवाल आपके विपक्ष पे पूछेंगे। आज हमने देखा राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उससे फ़र्क पड़ेगा क्या? यू वर क्वेश्चनिंग वेर आर दे, व्हाई आरंट दे डूइंग जॉइंट थिंग्स, नाउ दे फाइनली कम टुगेदर. One question on that, and second question, Mayawati has made Western UP statehood pitch. That's good. I support her demand for it, but it's not a demand made with any seriousness. She's not really there in the fight, if you look at it. As far as Congress and SP, they are trying their best, but press conferences won't cut it. Thank you. After decades of nursing a social combination of Jats and Muslims in Western UP, the RLD and its party chief Jayant Singh are now fighting to stay relevant. Will a new camp lift its fortunes is the big question. That was the NewsX Road Stop in Baghpat. Keep watching our non-stop ground series.